नमस्ते। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन यूट्यूब चैनल एजर्टिव आयुर्वेदा पर। और आपको याद होगा मित्रों कि हम लोग बात कर रहे हैं इस समय फाइटो फार्मास्यूटिकल्स की। तो फाइटो फार्मास्यूटिकल्स कैसे इसका आइडिया आया, कहाँ से इस बात शुरू हुई, इस पर भारत सरकार ने फिर क्या क्या किया, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय का कैसे गजट नोटिफिकेशन आया नवंबर 2014 में, एंड ऑनवर्ड क्या क्या हो रहा है, इस पर हम लोग एक समराइज वे में चर्चा कर रहे हैं। अब आज इसके फाइनल सेशन मतलब इस अगस्त महीने का, अभी भी फाइटो फार्मास्यूटिकल में कोई बहुत अच्छी चीज़ हमको आगे मिलेगी, हम तुरंत आपके पास आएंगे। और कोई भी चीज़, कोई भी टाइटल, कोई भी टॉपिक डायनेमिक होता है, वो एक जगह बंद नहीं हो जाता कि हमने फाइटो फार्मास्यूटिकल पर बात कर लिया तो अब नहीं करेंगे, एपीआई पर हमने बात कर लिया तो अब नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस, और एजुकेशन के रूप में ये हमेशा चलती रहेगी। जब भी कोई भी टॉपिक पर, किसी भी शिक्षक पर कुछ भी नया अच्छा मिलेगा, हम आपके बीच में होंगे। तो कुछ नया आता है तो आप हमको बताइए, हो सकता है कि हमारी रीत से बाहर हो, हम उसको न पकड़ पा रहे हो, तो आप हमको सूचित करिए किसी भी माध्यम से, और हमें उसको पढ़ करके, उसको समझ करके आपके बीच आने में कुशलता होगी। तो देखिए, फाइटोफार्मास्यूटिकल के जो कॉन्सेप्ट पर हम बात करते करते आगे बढ़ रहे हैं, और पूरे डिटेलिंग के बाद मेरा आइडिया और ये बनता है, मैं समझता हूँ कि यदि आप आयुर्वेद से संबंधित हैं तो आप ऐसा सोचेंगे, संभव है। यदि आप आयुर्वेद से नहीं संबंधित हैं तो आप किसी दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, या हम कैसे सोचना चाहते हैं, उस आधार पर हम फाइटोफार्मास्यूटिकल के बारे में अलग अलग राय बना सकते हैं। वी मे हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सेम इशू, सेम सब्जेक्ट, that is the phytopharmaceutical. Now it's very clear to us what is phytopharmaceutical. Fine. Then just I am reading it. It's a legal definition. What is phytopharmaceutical? Then it's like this. Phytopharmaceutical drug is defined as purified and standardized fraction with defined minimum four bioactive or phytochemical compounds qualitatively and quantitatively assessed दिखना चाहिए। सॉरी, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ूं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से दोबारा शुरू करता हूँ। Phytopharmaceutical drug is defined as purified and sterilized fraction with defined minimum four bioactive or phytochemical compounds qualitatively and quantitatively assessed, often extract of a medicinal plant or its part, for internal or external use of human beings or animals for diagnosis, treatment and the like. बस आप, तो इतनी सारी बातें हैं फार्मास्यूटिकल। एक पूरे प्लांट से या उसके किसी पार्ट से मिनिमम 4 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, बायोएक्टिव, this is sufficient for understanding bioactive, and that should be quantitatively and qualitatively assessed. खाली कह देने से नहीं, वो सामने दिखना भी चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस में, एनालिसिस में दिखना चाहिए कि ये 4 हैं, उसके पीक और कंसंट्रेशन बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली मस्ट बी देयर, और जिसका कि यूज किया जा रहा हो ह्यूमन पे चाहे एनिमल पे, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वो फाइटोफार्मास्यूटिकल है। फाइन, नो प्रॉब्लम, गुड डिफिनेशन। और इसके पहले जो हम बात कर चुके हैं आपसे कि इसकी इन्वेंशंस के लिए, इसका क्वालिटेटिवली वैलिडेशन के लिए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो हर्बल मेडिसिन के साथ आज के 20 साल पहले भी थी और लगभग उतनी ही आज भी है, वो है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल की फील्ड में जाने पर हमें ढेर सारी चीजें सोचनी पड़ रही हैं कि हमारे यहाँ पर जो पैरामीटर्स भी हैं वो बहुत स्पीकिंग पैरामीटर्स नहीं है।
everything in the range of probability, and we are assuming that this is possessing good quality. Certainly, this is possessing good quality, but that good quality is limited to certain producers only. This is not true for all, and for majority it is not. Those who are in the profession of manufacturing of Ayurvedic medicines are not so good in infrastructure. Not only the infrastructure, not so good in their thought processes. They should maintain the quality as per the requirement for the safeguard of the consumer, that is the common man, patient, and many more. So real problem is here. The approach, the positive approach is lacking. The challenging approach to produce quality medicine is lacking. In the whole domain of the herbal medicine, specifically if it is called as the cast of study of Ayurvedic medicine. There are certain players who are moving with the accomplishment of every criteria which is required even at the international level. But majority is not. And the rarest examples never made rule. Or the rare examples never made rule. If it is not generalized phenomenon, then it is a point of worry. Okay. So some people thought that this phytopharmaceutical may be helpful in the maintenance of the quality and the standard of herbal medicine. Be aware, I am not saying Ayurvedic medicine. Everything is for herbal medicine, phytopharmaceutical. And in this process, they develop a lot, they work a lot, they got it legally recognized, they develop its protocol, they develop protocol of the phytopharmaceutical, they get annexures in the schedules, specifically in the schedule Y. The schedule Y1 was added in the drug rule 1945. Overall, in the today, what we may say about the phytopharmaceutical? It is a matter of conflict. Ayush Ministry is talking about Ayurvedic medicine and the phytopharmaceutical. Ministry of Health is talking about herbal medicine and the phytopharmaceutical. And in between these two ministries, there is a struggle of empowerment. Which ministry is authorized to deal with this particular section of drugs, which is known as phytopharmaceutical. The word phyto always invite Ministry of Ayush to make its claim, and the word pharmaceutical always invite Department of Pharmaceutics, which is not under the Ministry of Health. It is under the Ministry of Chemical and Fertilizer. However, in Ministry of Health, it's our domain. More study, more confusion. Just a joke. But sometimes it's true. When I was going through the phytopharmaceutical, I got a lot published in 2015, 2017, 2019, 2021. People are talking about the phytonutrient. People are talking about the functional food. People are talking about the medicinal food. People are talking about the herbal nutraceutical. And everywhere there are the published material which may be studied for the academic interest, even for the practicality. Yes, whether the phytopharmaceuticals term is applied to a material which is in the market as nutraceutical,
have gone through many papers published. You just search it and you will get it. I'm not quoting that particular paper or the name. If I am speaking and referring that, means I am, when if I am not opposing, I am not making any reservation on their observations, means I am agreed upon. That's not true. And if I don't want to, provide them less significance by saying that yes, your work is not proper or not good. See, in the initial stage of making of concept, in the initial stage of research, there is a several lacuna, and which is protested in the beginning, that is final in the end. Yeah, which is protested in the beginning, that is final in the end, after the due course of researches. It's maybe true a day will come after 1 century or even after 50 years or even after the 20 years that we all may be agreed upon the phytopharmaceuticals are good medicinal food. Phytopharmaceuticals may be good functional food, or even phytopharmaceuticals are good herbal nutraceutical. देखिए, यहीं पर सारी बात आकर के अटक जाती है और यही समझना और सोचना है. अब ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप जब सर्च कर लीजिएगा phytopharmaceutical as a nutraceutical, phytopharmaceutical as a functional food, medicinal food, you will get a lot of published paper and go through that. It is not like that I am not quoting some paper. I quoted the paper of the Sir Bhatt. I quoted the paper of Professor Patwardhan. And I am just appreciating that approach. But somewhere if it is not agreeable at the moment, then I don't want to make a negative comment on the writers and authors of those papers, which are advocating that phytopharmaceuticals are nothing, they are the phytonutrient. Yes, they are having this approach. Phytopharmaceuticals are nothing but they are phytonutrients. They are not making any therapeutic claim. They are just subsiding it and supporting it, that you are taking it and that will potentiate your everyday health by fulfilling all requirements of nutrition in your body, and that is in the form of a capsule or a tablet. People are approaching that this maybe the potentiation of the nutraceuticals which are in the market, if the phytonutrients are added there. So these different approaches are hammering my mind. And at the date of today, that is the 16th August 2023, I am unable to make any comment either in positive or in the negative. So just in the neutral way, I am keeping this information before you to think upon. So breakthrough में भी, क्योंकि आयुर्वेद भी यही कहता है कि आहार ही औषधि है और औषधि आहार ही औषधि है. दूसरा वाला कहने में मुझे शुरू से प्रॉब्लम रही है, मैं उसको नहीं बोल पाता हूँ अपनी छोटी सी बुद्धि में. आहार औषधि है ये मानने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन औषधि ही आहार है ये मानने में मुझे तकलीफ हो जाती है. मैं कह दे रहा हूँ मेरी बुद्धि छोटी है, इसलिए मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जाकर के मेरे उससे जुड़ जाती है, मेरे विषय से, जहाँ के हम विद्यार्थी हैं रसायन विशेष कल्पना से. और फिर एक बात कहाँ जाकर रुकती है, डोज पे जाकर रुकती है. और वो डोज भी कौन सी, अगले कल्पना की डोज. कहते हैं 12 ग्राम खिलाएंगे,
वो तो बिल्कुल एक नाश्ता ही हो गया ना। 48 ग्राम दिन में हम च्यवनप्राश खिलाएंगे और उस पर से तर्क ये देंगे कि आहार ही औषधि है और औषधि ही आहार है। च्यवनप्राश को औषधि भी मानेंगे और कहेंगे कि ये आहार भी है। बड़ी गड़बड़ झाला है भाई, बहुत गड़बड़ झाला। ये ऐसा ही गड़बड़ झाला है कि एक बार पुट की पढ़ाई हो रही थी, जल्दी मैं आपके पास पुट के साथ आने वाला हूँ। तो ये बात बहुत पुरानी है, 1998-99 की है, जब हम रियल सेंस में एमडी आयुर्वेद की डिग्री के लिए विद्यार्थी थे। आज हम प्रोफेसर हैं, फिर भी विद्यार्थी हैं। अपने नॉलेज को प्रोफेस करने के लिए हम विद्यार्थी हैं। और ओशन ऑफ नॉलेज में थोड़ा और परफेक्शन आ जाए तो वहाँ हम एज ए प्रोफेसर विद्यार्थी हैं। लेकिन जब हम एमडी आयुर्वेद डिग्री अपना लेने के लिए विद्यार्थी थे 94 से 97 के बीच में, उसी समय इन द एंड में एक विजिटर आए, हाई-फाई विजिटर थे, डॉक्टर थे। उनके साथ एक बीएमएस की हुई भद्र महिला भी थी। तो वो बोले कि वो कुछ नया वेंचर शुरू करना चाहते थे। वो लोग दिल्ली से बनारस खाली आइडिया लेने आए। वो नया वेंचर शुरू करना चाहते थे, जैसे कि आजकल के ज़माने में कॉमन टर्म हो गया स्टार्टअप। तो उसी तरीके का कुछ वो कंबाइंड वेंचर शुरू करना चाहते थे, आयुर्वेद और एलोपैथी को मिला कर। फाइन, गुड। और वो जो मैडम थी, उनसे हमारे सर ने पूछा, डॉक्टर एस के सर ने, कि कहीं हमने बीएमएस किया है? तो बोले कि चलिए खुद बताइए। वो भस्मों के बारे में बात कर रही थी। तो सर ने पूछा गजफुट क्या होता है? तो जो बीएमएस भद्र महिला थी, उन्होंने कहा कुहार के आवे जैसा गड्ढा हो, उसमें पूरा गज एक हाथी घुस जाए तो उसे गजफुट कहते हैं। अब उनके इस ज्ञान पर एमडी आयुर्वेद के विद्यार्थी के रूप में मैं भी वहाँ था, सर भी थे। अब न सर को कुछ बोला जाए न मेरे से बोला जाए कि गजफुट वो है जिसमें कि कुहार का जो आवा होता है, इसमें वो मिट्टी पकाता है, उसका डायमेंशन एक हाथी के बराबर हो तो वो गजफुट है। तो अब इस तरीके के जब इंटरप्रिटेशन आने लगते हैं तो दिक्कत है। तो आहार ही औषधि है और औषधि ही आहार है। और आयुर्वेदिक औषधि को आप आहार के रूप में लेने लगे तो हो चुकी पोस्टोलॉजी। तो आप इतने सारे क्वेश्चंस इनवाइट करेंगे जिनका की कोई सीमा नहीं है। तो अवलेह कल्पना एक रेयर हो सकती है जहाँ की हाई डोजेस फॉर्म है, लेकिन ये चीज चूर्ण पर भी नहीं लागू होगी। रस औषधियों को तो छोड़ ही दीजिए। देखिए, सरस और वात के डोज में लोगों ने परिवर्तन कर लिया अपने हिसाब से और पीने लगे फ्रीक्वेंटली, डिजायर्ड अमाउंट से ज्यादा, थेरेपेटिक डोज से ज्यादा। क्या हासिल हुआ पेंडेमिक में? तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं सापेक्ष में। नथिंग इज एब्सोल्यूट, नथिंग इज एब्सोल्यूट। तो ये जो फाइटो न्यूट्रिएंट और फाइटो फार्मास्यूटिकल को सिनोनिम बता के फाइटो फार्मास्यूटिकल को मेडिसिनल फूड बता देना किसी पब्लिकेशन में, continuously by a group of researchers, they are publishing since 2015 to 2021 on the same line, and they are addressing the world, the scientific community, to accept their thought. It's a point of concern in every sense. It may not be generalized. जिफ्लाचूर्ण आहार नहीं हो सकता, च्यवनप्राश आहार नहीं हो सकता, वासावले आहार नहीं हो सकता। हम तो अभी खाली कास्ट औषधियों का ही एग्जांपल दे रहे हैं, वो भी मोस्ट कॉमन है। हमारे यहाँ से आहार नहीं हो सकता। तो कैसे आप कहते हैं कि आयुर्वेदिक औषधि आहार हो जाएगी? आहार ही औषधि और औषधि ही आहार है।
या आप कैसे कर सकते हैं कि नहीं फाइटोन्यूट्रिएंट्स आर द फाइटोफार्मास्यूटिकल एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल्स आर द फाइटोन्यूट्रिएंट्स। नो, मैं अपनी बुद्धि से ये समझ पाता हूँ कि नहीं है ऐसा। Phytonutrients are phytonutrients serving the purposes of nutraceutical. Phytonutrients are the nutrients quality which are from the herbal origin. And phytopharmaceuticals are the pharmaceuticals which are serving therapeutic purposes, and the source is phyto, herbal. In the same way phytonutrient. तो ऐसे भी पेपर्स हैं जिन पर विचार करना बहुत जरूरी है, और वो ये कि फाइटोन्यूट्रिएंट, फाइटोफार्मास्यूटिकल, ये दोनों अलग अलग व्यवस्था है और इनको एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। तो फाइटोफार्मास्यूटिकल के बारे में आज एज ऑन टुडे स्थिति ये है। अब गूगल ज्ञान तो ये कह रहा है कि फाइटोफार्मास्यूटिकल के अंतर्गत कुछ चीजें अवेलेबल हैं, और they have been treating since they are the time memorial, वो सब बातें सब आ रही हैं। What are the properties? एक मेजर चीज यहाँ पर ये दे रहे हैं कि नहीं, मैं उसको भी कोट नहीं करूँगा क्योंकि गूगल ज्ञान को कोट करने में थोड़ी सावधानी रहनी चाहिए। देखते हैं ये क्या कहते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फार्मास्यूटिकल? फाइटोफार्मास्यूटिकल इज वेरी ब्राइट as far as commercial viability is concerned, and it may be however premature to say the fate of pharmaceutical in the Indian market. Phytopharmaceutical may play a significant role in achieving the evidence-based approach for the Ayurvedic drugs. Yes, अच्छा लगा इनका approach. Phytopharmaceuticals is a very bright as far as commercial viability is concerned. It may be however premature to say the fate of pharmaceutical in the Indian market, and phytopharmaceutical may play a significant role in achieving the evidence-based approach for Ayurvedic drugs. And नहीं, मैं बिल्कुल इन लोगों से गूगल ज्ञान पर सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि these are the examples of the phytopharmaceutical which are there. You will Google and you will get. But I need a certificate from the CDSCO that this has been licensed under the phytopharmaceutical category of the new drug rule 122DE. गूगल ज्ञान से तो मुझे ढेर सारा फाइटोफार्मास्यूटिकल्स के एग्जाम्पल दिख रहा है। मैं अभी उन पर शंका रखता हूँ और आपको भी यही सलाह दूंगा कि अगर इस तरीके से आपको मिल रहा हो फाइटोफार्मास्यूटिकल के उदाहरण तो उस पर विचार करिए। और इसके साथ ही जस्ट इस समय फाइटोफार्मास्यूटिकल्स को थोड़ा विराम देते हैं, और पेटेंट शुरू करने के पहले बीच में मैं एक दो टाइटल्स और लूँगा जो कि अभी तुरंत आ रही हैं डिमांड में, और फिर हम लोग एक तैयारी के साथ पेटेंट और IPR पर बात करेंगे। तब तक के लिए, अगले सेशन तक के लिए नमस्कार। आपका दिन बहुत शुभ हो। हालांकि आप तो इसको सुनेंगे शाम को 6 बजे, तो मैं शुभ संध्या ही कह दूँ। नमस्ते।